So we're continuing the topic modulus function. Let's quickly revise what we discussed about graphs of modulus function yesterday. Y equals modulus x minus 5 is transformation of this graph 5 units to the right. So we went over all the transformations and we had discussed that the nature of this graph or the characteristics of this graph are the same as quadratic graph. Okay, ऐसी बात हुई थी कल. Let's build on that today. If the graph is y equals 3x minus 5 and you have to sketch the modulus of that, so who can tell me what's going to be the turning point of this graph? It's definitely going to be a V-shaped graph because of the modulus sign. Turn किधर होगा वो graph? चलो. Y equals modulus x minus 5 दोबारा ड्रॉ करते हैं. What is the turning point of this graph? It's 5, 0. 5, 0. Adhan and Marine, I haven't heard you guys talk in a long time. I hope everything is good. It's 5, 0, exactly. So keeping that in mind, how do you find the x value of the turning point? You just equate it to 0. You equate this function to 0. So what is the value of x, Adhan, when you equate 3x minus 5 to 0? 5/3, man. So x value would be 5/3 and there's no value being added or subtracted outside of the modulus function. So y is 0. So the turning point is going to be 5/3. Okay. Okay, so you draw a graph like this and this. When you're drawing a graph, you must show all the intercepts. Okay, so we've shown the x-intercepts. How do we show the y-intercept? What is going to be the y-intercept? Where the graph cuts the y-axis. When graph cuts the y-axis, x is 0. So substitute x is equals to 0 here. Y equals modulus 3 times 0 minus 5. Modulus close. So क्या आ गई y की value? -5. 5. Positive. Yes, exactly. -5 तो modulus के अंदर आएगा. And then that gives y equals to 5. So the y-intercept is y equals 5. Okay, this is what the graph, the sketch of the graph would look like. Okay. अच्छा, कुछ books में या कुछ teachers इसको ऐसे भी पढ़ाते हैं. So let's go over that as well. What you'll do first is simply draw the graph of y equals 3x minus 5. So if you draw the graph, जैसे हम O-levels में draw करते थे, so we use the table method for linear graphs. So x and y. When x is 0, y is going to be -5. And when y is 0, x is going to be 5/3. Let's draw this. So when x is 0, y is going to be -5, somewhere over here. And when y is 0, x is going to be 5/3, let's say somewhere over there. So the graph without the modulus function would look like this. इस तरह का graph. One मेरा मुझसे सही. Some reason the software glitch करा okay, better. So this would be the graph for y equals 3x minus. However, if we place modulus around 3x minus 5,
दैट मीन्स अब ये ग्राफ नेगेटिव नहीं हो सकता. तो जो नेगेटिव साइड है ना, ये वाली साइड, ये अपवर्ड रिफ्लेक्ट हो जाती है. So you get a graph like this, and now your y-intercept is going to be 5. ये 5 इधर आ जाता है. So ऐसे भी ग्राफ बनाया जा सकता है. Then what you have to do with the negative graph, you can just make it dotted. तो dotted कर दो. That is not part of the actual graph, और actual graph के ऊपर है. The graph that is above the x-axis. ठीक है? That is also one way of sketching modulus function. ठीक है? Secondly, you might be asked to find डोमेन गिवन होगी क्वेश्चन के साथ. So will be given a domain. X is between 0 to 3. So you have to sketch the graph between this region only. So 0 पे तो हमें पता है 5 है, उसके बाद 3 तक प्लॉट करना है. So you have to find the value of the graph when x is 3 as well. ये करके देखते हैं. Y equals modulus 3 times 3 minus 5. 9 minus 5, which is 4. So you have to show this in the graph as well. So when x is 3, y is 4. Let's say यहाँ कहीं 3 है और यहाँ पे 4 है. थोड़ी स्केल ड्राइंग होगी. अभी मैंने y एक्सिस के x एक्सिस के स्केल का ध्यान नहीं रखा, बट आप लोग रखोगे. और मोस्ट प्रॉब्ली एक ग्रिड गिवन होगी तो उसी पे प्लॉट करना होगा. सो स्केलिंग की मिस्टेक होने के चांसेस काफी कम है. अभी तो मेरा स्केल काफी ऑफ है. 5 divided by 3 is what? 1.66. अच्छा नहीं, इतना भी नहीं होगा. This is 1.6 and that is 3. तो चलो चला लेते हैं गुजारा. So आपने ग्राफ बनाना है यहाँ से लेकर 3 तक, इधर तक. बाकी ग्राफ नहीं होना चाहिए आपके सोल्यूशन का पार्ट. ये हटा दिया और यहाँ से ये हटा दिया. And then you might be also asked to find the range of the function. State range of fx, range of y. So what is the range of this function in the domain 0 to 3? रेंज क्या होता है? y की वैल्यू की लिमिट्स. तो हमारे ग्राफ में y की वैल्यू की लिमिट्स क्या है? 0 to 5. Yes, the graph goes from 0 till 5. तो रेंज इज बिटवीन 0 to 5. ठीक है? जब आपके पास स्केच होता है ना, तो रेंज बताना बहुत ही आसान होता है. आपने मैक्सिमम y की वैल्यू रीड करनी है ग्राफ से, और मिनिमम वैल्यू रीड करनी है. सो fx will be between 5 to 0. Sorry, 0 to 5. ठीक है? मैम मैक्सिमम वैल्यू कैसे आती है? स्केच को देख के. y इंटरसेप्ट है हमारा 5. इसकी अभी स्क्रीनशॉट ले लो, और आगे इस तरह के और क्वेश्चंस करेंगे तो वो एक दफा मेरे साथ कर लोगे तो दिस विल मेक. मैं इनइक्वालिटी के साइन का देख रही हूँ कि कहीं मैंने इनइक्वालिटी का साइन इक्वल्स टू तो नहीं यहाँ कहीं लगाना. 0 के साथ तो इक्वल्स टू लगना चाहिए, क्योंकि 5/3 तो डोमेन का पार्ट है. यहाँ इक्वल्स टू लगेगा. और 5 के साथ इक्वल्स टू नहीं लगेगा, क्योंकि 5 कब आया था? जब x 0 था, और x 0 डोमेन का पार्ट नहीं है. तो इसके साथ जस्ट लेस देन सिंबल, और इसके साथ लेस देन इक्वल्स टू. ठीक है? क्यों मैंने 0 के साथ लेस देन इक्वल्स टू किया है? क्योंकि जब y 0 है इधर, तो x की वैल्यू है 5/3, और 5/3 डोमेन का पार्ट है. 5/3 0 to 3 के बीच में है, तो इसके साथ इक्वल्स टू. और जो 5 है, y 5 आता है जब x 0 है. x 0 डोमेन का पार्ट नहीं है, क्योंकि उसके साथ इक्वल्स टू नहीं. तो हम 5 के साथ इक्वल्स टू नहीं लिखते. तो 0 के साथ इक्वल्स टू, बट 5 के साथ इक्वल्स टू नहीं.
ठीक है, मेरीन, अदन, फजील एंड हैदर, ये बात समझ आई है? Yes, ma'am. Okay. All right, let's take a look at another sketch. Fx equals modulus 2x minus 5 minus 2. Chale. Tell me what's going to be the turning point of this equation, expression. 5, 2, -2. 5 by 2. 5 over 2. So yeah, I understood that is what you meant. So x turning point, x of the turning point is going to be 5 by 2 and y of the turning point is going to be -2. ठीक है, x कैसे आया है इसको इक्वल्स टू 0 करके और y कैसे आया है एग्जैक्टली इसको लेके, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता था. ओके, सो दिस इज द टर्निंग पॉइंट. लेट्स ट्राई टू स्केच द ग्राफ. सो 2.5 रफली यहाँ कहीं 1 2 3, इधर कहीं 2.5 and then -2. यहाँ पे आ गया. So I just need 1 second. Okay, so this would be the turning point. तो रफली कुछ इस तरह का ग्राफ होगा. ओके, इसका y intercept देखते हैं क्या होगा. What is going to be this value? How do we find the y intercept again? X 0. हाँ, x को 0 substitute करते हैं. So modulus 2 times 0 minus 5 minus 2. So this is going to be -5 modulus -2, which is going to be +5 minus 2, which is going to be 3. So this is 3. यूजुअली आपको कहा जाता है कि आपने सारे इंटरसेप्ट्स बताने हैं, x भी बताना है, y भी बताना है. तो x इंटरसेप्ट हम इसका कैसे बताएं? मैम fx equals to 0 करके. y को इक्वल्स टू 0 करते हैं. सो 0 इक्वल्स मॉडुलस 2x minus 5 minus 2. So 2 is equals to modulus 2x minus 5. We know how to solve this algebraically. Remove the modulus function and place plus minus 2x minus 5 equals to 2. वैसे honestly जब ग्राफ की स्केचिंग आती है तो इतना लंबा काम नहीं करना पड़ता. टू फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, बट अब बस ये क्वेश्चन है बुक में तो हम कर लेते हैं. 2 is equals to 2x minus 5, 2x is equals to 7 and x is equals to 7 divided by 2, 3.5. Okay, and 2 equals minus 2x plus 5. 2x is equals to 3, x equals 1.5. एक वैल्यू आ जाएगी इधर 1.5 और एक x इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाएगी 3.5. Okay. If you're done with this, now I'm going to slightly change the question and give you a domain. This domain may you'll have to sketch the graph and then also you'll have to state the range for that given domain. Okay. So let's say that the given domain is x is between 0 and less than equals to 5. So 0 पे तो sketch किया हुआ है हमने, अब 5 तक sketch करना है. So let's find the value of fx when x is 5. So fx equals modulus 2 times 5 minus 5
modulus minus 2. So we have fx equals 10 minus 5 is 5, 5 minus 2 is 3. So that would be 3 as well. So when x is 5, y would be 3. तो यहाँ पे कहीं x5 आ जाए. So your graph will end here. Okay. Now you have to state the range of the graph as well. What is the range of the graph? -2 और 3 के बीच में. -2 and 3 के बीच में, सही है. इनइक्वालिटी इक्वालिटी का साइन किसी के साथ लगेगा, नहीं लगेगा? दोनों के साथ लगेगा क्योंकि ओके. अदन आप क्या कह रही हो? वो खाली 3 के साथ लगेगा. 3 के साथ लगना चाहिए क्योंकि 5 जो है वो डोमेन का पार्ट है. जब 5 डोमेन का पार्ट है तो फिर उसकी जो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू है वो भी डोमेन का पार्ट है. ठीक है. -2 जब आंसर आया है y का तो तब x की वैल्यू क्या है? जब y -2 है 2.5 है, वो डोमेन के की अंदर है. वैल्यू 2.5. हाँ, 2.5 is also in the domain. ठीक ठीक है. है. So you must write an equals to sign. मैम हम्म. फॉर एग्जांपल डोमेन 0 से 4 के बीच में आती तो फिर क्या रेंज होती है इसकी? 0 to 4 डोमेन होती, करके देख लो. यस. 0 to 4. ओके. 0 to 4 होती ना तो फिर हम यहाँ से यहाँ तक ग्राफ प्लॉट करते. ठीक है. ये ना करते ऊपर वाला पार्ट. तो अब आपकी y की वैल्यूज क्या है? मैक्सिमम और मिनिमम. मैम -2 तो मिनिमम है, मैक्सिमम कैसे पता चलेगा क्योंकि आप ग्राफ को देखो और 3 से बताओ. कम है ये तो. 3 से आपके कम है. नहीं, आपके ग्राफ में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू -2 and 3 है. So you write -2 again, fx here and 3 again. But शायद equals to sign पे फर्क पड़े. यस मैम वही पूछ रहा था. equals to sign पे कैसे फर्क पड़ेगा? मैम 3 के ऊपर नहीं आएगा. 3 अब कैसे आया है? 3 0 से आया है. ठीक है. अब वो दूसरी साइड वाला 3 तो नहीं है, ये 3 0 से आया है and 0 is not part of the domain, so you don't write equals to with 3, but इसके साथ आएगा अभी भी equals to. ठीक है. क्योंकि -2 पे 2.5 है x की वैल्यू and that is still in the domain. ठीक है. Okay, moving on. fx equals modulus 2x minus 1. Okay, so what's the turning point? हाफ कॉमा 0. Yes, half comma 0. Equate this to 0, you get x equals half, and there's nothing being added or subtracted here, so comma 0. So turning point or vertex is half comma 0. Okay, so half is, let's say, somewhere over here. Or graph would look like this. And tell me what is going to be the y-intercept. 1. 1. You simply substitute x as 0. So 2 times 0 minus 1 is modulus of -1, which is 1. So 1 आ गया. ठीक है. So this is a rough sketch. अब अगर domain change हो जाती है, domain given is between -1 less than x less than equals to 3. तो अब -1 पे y की वैल्यू देखनी पड़ेगी. से -1 यहाँ कहीं है. So what is the value of y when x is -1? So y equals modulus 2 times -1 minus 1 would be 3.
So -1 पे y की वैल्यू है 3. So yeah. So this should be shown in the graph -1, 3. और फिर कहाँ तक जाना है? +3 तक जाना है. 3 पे क्या वैल्यू है? y equals modulus 2, 3, -1, which is 5. So when x is 3, somewhere over here, y is going to be 5. Yeah. Okay. So your graph is drawn from here till here. आप मुझे बताओ इसकी रेंज क्या लिखेंगे? 0 to 5. 0 to 5. Okay. Fx is between 0 to 5, as we can see from the graph. और equals to का साइन क्या 0 के साथ आएगा? Yes, ma'am. क्यों आएगा? क्योंकि 0 वैल्यू कब आई है? 0 वैल्यू आई है हाफ पे, और हाफ हमारे डोमेन का पार्ट है. -1 और 3 के बीच में आता है. सो यू मस्ट राइट इक्वल्स टू विद विद 0 और 5 के साथ. 5 कब आया है? जब x 3 है और 3 भी डोमेन का पार्ट है. सो इसके साथ भी इक्वल्स. क्या? Okay. मेरे ख्याल में डोमेन रेंज की काफी प्रैक्टिस हो गई है. इसके बाद इसकी वर्कशीट में करेंगे. अगली बात पे आते हैं. Let's quickly revise the number line concept of Modulus function, क्योंकि इस पे बिल्ड करके अगली बात पे. तो हमने डिस्कस किया था yesterday that if we have to solve modulus x minus 3 less than 1, then we have two options. एक तो algebraically करने की और एक नंबर लाइन से करने की. पहले नंबर लाइन रिवाइज करते हैं. नंबर लाइन के लिए आप पहले इसको इक्वल्स टू 0 कर देते हो, तो x की वैल्यू आ जाती है 3. So we have x equals to 3. Now x is that value whose distance from 3 is 1. So what is going to be the possible values of x? X is that value whose distance from 3 is 1. 2 and 4. या 2 है, 1 डिस्टेंस इधर से, या 1 डिस्टेंस इधर से, तो 4 आ. तो क्रिटिकल वैल्यूज तो आ गई 4 and 2. अब it says the distance is less than 1. Then what should be our final answer? The distance is not equals to 1. अगर equals to Greater होता than तो 2 and less than 4. हाँ, greater than 2 and less than 4. If the distance is less than 1, that means x की वैल्यू 2 से बड़ी है लेकिन 4 से छोटी. ठीक है. ओके, अब इसको algebraically भी करते हैं. Plus minus modulus x minus 3 less than 1. Modulus nahi bracket, sorry. So x minus 3 is less than 1, gives x is less than 4, and minus x plus 3 less than 1 gives 2 less than x, that is x is greater than 2. So you combine these together and you write x is greater than 2 but less than 4. Okay. अब क्या होगा कि अब आपको ये इनइक्वालिटी गिवन होगी और आपको कहा जाएगा कि इससे इसका रिस्पेक्टिव मॉडुलस फंक्शन बनाना. उल्टा काम करना. ठीक है. यू विल बी गिवन दिस इनइक्वालिटी एंड यू विल बी आस्क्ड टू फाइंड द मॉडुलस फंक्शन. तो अब उसके लिए क्या करते हैं? द फर्स्ट स्टेप यू विल डू इज फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ 2 and 4. व्हाट इज द मिड वैल्यू ऑफ 2 and 4? Yes, what is mid value of 2 and 4? 3. 3. 3. Yes. तो मिडिल में आ गया 3.
अब आपके पास आ गया x इज इक्वल्स टू 3, जिसको आप लिख लोगे x माइनस 3 मॉडुलस। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। ये पार्ट तो आ गया मिड पॉइंट्स। और फिर आपने देखना है कि इस 3 का 4 और 2 से डिस्टेंस कितना है, कितने यूनिट्स है डिस्टेंस? 1 1। और सिंस यहाँ पे लेस देन था तो आप लिखोगे लेस देन 1। या ठीक है, we'll do quite a bit of practice of this. What about this one? X plus 2 is greater than equals to 3. Let's first use number line to solve this. What should I write here first? किस नंबर से शुरू करें नंबर लाइन को? -2 हाँ, -2. Equate this to 0 and you get -2. So we have -2 here. So x वो value है जिसका -2 से distance 3 है. So x is going to be 3 units to the right or 3 units to the left, which gives us what? 1. और यहाँ पे क्या आ जाएगा? -5. ठीक है, but it says that the distance is greater than 5. तो वो ये वाला रीजन है या फिर ये वाला रीजन है जहां पे greater than 5, नहीं सॉरी 5 नहीं 3, greater than 3 ये वाला रीजन है. So your answers would be x is greater than 1 and x is less than -5 or equals to or equals to b, क्योंकि यहाँ पे equals to. ठीक है, so when you have greater than symbol in the modulus function question, तो आपके पास 2 sets of answer आते हैं. Okay, now let's do this algebraically. Plus minus x plus 2 is greater than equals to 3. X plus 2 is greater than equals to 3. X is greater than equals to 1. Minus x minus 2 is greater than equals to 3. So sending x to this side and -3 to the left side, so -5. So x is greater than equals to 1 or x is less than equals to -5. Same answers. Okay. 2 sets of answer. कल मैंने ये भी कहा था, when you have 2 sets of answer, always check back with the equation के दोनों sets of answer ठीक हैं कि नहीं. अभी उसकी बात नहीं कर रहे, बट आइडियली अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप करके देखोगे, x2 सब्सटीट्यूट करके देखोगे और x लेट्स से -6 सब्सटीट्यूट करके देखोगे कि ये इनइक्वालिटी ट्रू भी है या फॉल्स है. अगर एक फॉल्स होगी तो उस सॉल्यूशन को डिस्कार्ड कर दो. अच्छा, अभी हमारा क्वेश्चन ये है कि हाउ डू वी चेंज दिस बैक इनटू द मॉडुलस फंक्शन. So same concept. First, give me the mid value of -5 and 1. -2. Yeah. You add these together, -5 plus 1, and then you divide it with 2, so that gives -2. ठीक है, यहाँ पे आ गया -2. So अब आप क्या लिखोगे? X equals to -2. So when -2 comes to this side, it actually becomes x plus 2 modulus. ठीक है, अब ग्रेटर देन है 1 और लेस देन इक्वल्स टू -4 है, तो ये ग्रेटर देन आएगा इधर से, ग्रेटर देन. एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन -2 and 1 और -2 and -5? हाउ मेनी यूनिट्स? 3 units 3 units, right? Greater than 3. यही था ना? यस, यही था. और क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू है तो मुझे यहाँ पे इक्वल्स टू भी लगाना चाहिए था, वरना फजूल में 1 मार्क करते हैं. Okay. Now let's directly practice converting inequality into modulus function.
अभी तो हम पहले कन्वर्ट कर रहे थे और फिर उसको वापस कन्वर्ट कर रहे थे, अब डायरेक्टली हम रिक्वायर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. ओके, क्वेश्चन इज रीराइट द गिवन inequalities using modulus notation. Rewrite the given inequalities using modulus notation. Okay, so the first one is, you try doing all of these on your own. फिर मैं थोड़ी देर बाद इसके आंसर्स लिखती हूँ. This is the first one. This is the second one. And this is the third one. And the fourth one. अगर नहीं आ रहा तो प्लीज इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल मी कि हमें नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे नहीं ऐसे पता चलेगा कि आ रहा है कि नहीं. प्लीज बी वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, और मुझे बस फौरन बता देना है कि नहीं हो रहा, मैं दोबारा करा दूँ. मैम इसके आंसर्स क्या हैं? मैं लिख देती हूँ.
कोई ऐसा आंसर जो ये ना हो आप लोगों का? यही आ रहे मैम। सारे यही आ रहे? यस मैम। ओके, मेरीन आप कौन से पार्ट पे? मैम के लिए सारे सही है। सारे सही है, excellent. ओके, चलो. What else? Are we done with the topic? Yes, we are. So I think मैं इधर lesson end करती हूँ and then we can rejoin and do a bit of past paper questions. All right, see you guys in a second. Part A, and then we have minus x plus 2 less than 3 minus 2x. So it's going to be x here less than 1. So we're getting x is less than 5 by 3 and x is less than 1. ये क्या अजीब सा है? दोनों less than आ गए. यस मैम, मेरा भी यही आंसर आ रहा है। वाक्यों का सेम आंसर। ठीक है. Okay. 5 by 3 is 1.66666. Let me just draw this on a number line. एक कह रहा है कि x जो है वो less than 1 है और एक कह रहा है कि x is less than 1.6666. तो इनमें से आपने वो आंसर लेना होता है जो दोनों में कॉमन है. कौन सा दोनों में कॉमन? 0 to 5 by 3। ये वाला नहीं, ये वाला. x is less than 1, x is less than 1 वाला जो रीजन है ना वो दोनों में कॉमन है, ये वाला. बट ये वाला जो रीजन है ये x is less than 1 में नहीं है. तो आपने इस छोटी वाली वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेना. This should be the answer. Let me just quickly check the answer at the back. Question 1 part A. Yes, it says x is less than 1 only. ठीक है. अगर थोड़ा डाउट है तो अब ऐसा करते हैं हम सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं. ठीक है, हमारे 2 sets of answer आए हैं. So like what we've discussed, we should take a value close to these limits and then put them back, substitute them in the original expression, and let's see if our answer is true or not. अच्छा, x is less than 1 पहले कर लेते हैं. x is less than 1 में कर लेते हैं 0.5, हाफ कर लें या 0 कर लें. जैसे बहुत दूर नहीं करना चाहिए क्योंकि 1.6 को अगर हम बहुत छोटा कर देंगे तो फिर तो वो ट्रू हो जाएगा. So let's see, let's take 0.5. x is equals to 0. Okay, so when x is 0.5, let's put it back. 0.5 minus 2 modulus less than 3 minus 2 times 0.5. So we have 1.5 here is less than 3 minus 1, 2. Yeah, 2 1. So it is true. So ये तो ठीक हो गया. अब ये चेक कर लेते हैं. x is less than 1.6666 के डोमेन में मुझे कोई x की वैल्यू बताओ. 1 से बड़ी बताओ ऑफ कोर्स. 1.2। 1.2 करके देखते हैं. So when x is 1.2, let's see if this equation holds true or not. So modulus 1.2 minus 2, is it less than 3 minus 2 times 1.2? So 1.2 minus 2 is 0.8, minus 0.8 modulus लेके it'll be plus 0.8. Is it less than 3 minus 2 into 1.2? 0.6? No, it is नो। false. So ये हो गया reject. So your answer would be this only. Any questions? Okay, let's do part B. In part B, there's modulus on both sides of the inequality. In such questions, you have to square both the sides.
So for part B, it is going to be 2x plus 1 whole square is less than x whole square. 4x square plus 4x plus 1, a square plus 2ab plus b square is less than x square. So we have 3x square plus 4x plus 1 less than 0. You will have to factorize this. Treat it as an equality first. This is a quadratic inequality. So we have 3x squared plus 3x plus x plus 1 equals to 0. 3x is common, x plus 1 plus 1 is common, x plus 1 equals 0. 3x plus 1, x plus 1 equals 0. So the critical values are x equals minus 1 over 3 and x equals minus 1. लेस देन 0 के केस में हम कैसे लिखते थे इन क्रिटिकल वैल्यूज को इनइक्वालिटी की फॉर्म में? जो y एक्सिस x एक्सिस नीचे हो ग्राफ के, हाँ जो नीचे हो, बिल्कुल सही है. या सो दोनों सेम ही इनइक्वालिटी फॉर्म कर रहे हो? हाँ, इकट्ठे करके लिख लेते थे. यहाँ पे आ गया -1/3 और यहाँ पे आ गया -1. It goes like this. So we're talking about this region where the graph is less than 0. So your answer must be x is between -1 and -1/3. Let me check the answer. ठीक है. Okay, let's quickly do two more examples and then we'll call it a day. एक quadratic वाली कर लेते हैं और एक simple कर लेते हैं. Okay, so we're done with A and B. Let's do C and D now. Okay, for C, it's going to be 2x greater than plus minus bracket x minus 1. Since the modulus symbol is at one side of the inequality only, you don't have to square both sides in this question. You write plus minus with the mod at the modulus end. Okay, so we have 2x is greater than x minus 1 and 2x is greater than minus x plus 1. So we have x is greater than -1 and we have 3x is greater than 1. फिर वही मसला x is greater than -1 and x is greater than 1/3. अब दोनों greater than तो नहीं होने चाहिए. So that means एक ठीक है और एक गलत है. So दो तरीके हैं again करने के. Either you choose the common region. अब इनमें common region क्या होगा? If I draw it on the number line, एक में x is greater than -1 और एक में x is greater than 1/3. So which region is common? Which inequality is common in both the 1/3. 1/3. So either you use this rule and directly choose this, क्योंकि ये वाला region तो हमारी x is greater than 1/3 की inequality में नहीं आता. So you can't choose x is greater than -1. उसमें कुछ ऐसा region है जो दूसरी inequality में नहीं है. लेकिन x greater than 1/3 में कोई ऐसा region नहीं है जो दूसरी inequality में नहीं है. So you choose the common one, or the other method is that you choose two values close to -1 and 1/3 and put it back in the original modulus inequality and check whether the numerical solution you have is true or false.
ठीक है, so I'll just stop this here and let's do part D. This would be the answer. Let me check on the back of the worksheet. X is greater than 1 by 3. Okay. And last question of the day, part D. Square both the sides, because on both sides of the inequality we have a modulus function, so x minus 2 whole square greater than 3 का square हो गया 9 and 2x plus 1 whole square. So we have a square minus 2ab plus b square greater than 9 bracket a square plus 2ab plus b square. So we can write a 0 here, greater than symbol 35x square plus 40x and plus 5. Okay. So this becomes, when we divide both sides with 5, this becomes 7x square plus 8x plus 1, और इसको इस तरह लिख लेते हैं less than 0. Okay. Solve this. 7x square plus 7x plus x plus 1 equals to 0. 7x, x plus 1 plus 1, x plus 1 equals 0. 7x plus 1, x plus 1 equals 0. So x equals minus 1 by 7 and x equals minus 1. So it's going to be x is, what's the smaller value here? Minus 1, and the bigger value is minus 1 by 7. This should be the answer. Let me check. Part D, minus 1 and minus 1 by 7. Okay. All right. That's all for today. If you have any questions, please stay back and ask. Otherwise, you can leave. मैं भी वर्कशीट को रिव्यू करके कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस ग्रुप में शेयर कर दूँ. Right, take care. Have a great weekend. See you on Monday, inshallah. Allah Hafiz, ma'am. Allah Hafiz. Allah Hafiz, ma'am. Allah Hafiz, Maureen. मैं पार्ट एफ करा दें. लॉग का अच्छा करा लॉग तो या नहीं, बट लॉग है. लॉग है, बाकी कुछ भी नहीं है. ट्राई कर लो, कर लोगे. इसमें लॉग आ जाता है. लॉग आपने किया हुआ है ना? यस मैम, इंटरनेट से. हाँ तो करा दूं, कहते हैं तो करा देती हूँ. मैम करवा दे पार्ट एफ. अच्छा देखो, जल्दी से करते हैं. प्लस माइनस 2x माइनस 8 लेस देन 8. एक आ गया 2x लेस देन 16 और एक आ गया माइनस 2 पावर x प्लस 8 लेस देन 8. तो ये आ गया 2x इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ इसको ऐसे लिख लेते हैं 2x इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे आ गया 2x इज लेस देन 16. ओके. लॉग नेचुरल से कर सकते हैं इसको. हाँ, हाँ, लॉग नेचुरल नेचुरल से कर लो. हाँ, लेकिन क्योंकि इनइक्वालिटी है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है. पहली तो बात है, आप इधर अगर आप लॉग ऑन बोथ साइड्स करोगे तो x नीचे आ जाएगा. ln2 ग्रेटर देन ln0 का तो नो सोल्यूशन होता है, मैथ एरर होता है. तो इसका तो सोल्यूशन ही नहीं. आप इधर ही लिख सकते थे नो सोल्यूशन, बिकॉज ln0 इज इलॉजिकल. ओके, अब यहाँ करते हैं x ln2 इज लेस देन ln60. अब आपने बिफोर यू डिवाइड ln2 टू द अदर साइड, आपने ये देखना होता है कि क्या ये नेगेटिव वैल्यू तो नहीं है. अगर ये नेगेटिव वैल्यू है तो आपने फिर इनइक्वालिटी को फ्लिप करना. तो बिफोर यू डिवाइड चेक इफ ln2 इज पॉजिटिव और नेगेटिव. इट इज पॉजिटिव, तो बस फिर कोई टेंशन नहीं है, इसको आगे ले जाओ.
ln16 ओवर ln2, लेकिन ये डिवीजन से पहले हमेशा कैलकुलेटर में डाल के चेक करना होता है कि क्या जो आप वैल्यू डिवाइड करने लगे हो वो नेगेटिव तो नहीं है। अगर नेगेटिव है तो आपने इनइक्वालिटी के साइन को फ्लिप करना है। और ये क्यों पहले चेक करने की जरूरत होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि कभी कभी समझो ln16 भी नेगेटिव है, और जब आप ln2 से डिवाइड करोगे, ln2 भी समझो अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल करके आपको कैलकुलेटर में पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो आपके जहन में ही नहीं रहेगा कि इनइक्वालिटी शायद फ्लिप करने की जरूरत है अगर ln2 नेगेटिव, तो पहले ही करके देखिए आप। ठीक है, ओके, सो योर आंसर विल बी ln16 divided by ln2, which is 4. X is less than 4 would be the answer.